Good morning, students. How are you? I am your science teacher Piyush sir. Today we study about the next part of the chapter food, where does it come from, and components of food. It is a part of first chapter, component of food. So in this chapter we study about the components. What are the components of food? It means nutrients, vitamins, carbohydrate, protein, fats, and I am your science teacher, Piyush. So let's start our new chapter, components of food. In this chapter, components of food. In last chapter, about the we read about the uh, food items by different state. अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं ये क्या किए जाते हैं, दे आर ईटन, दे आर खाए जाते हैं. In this chapter, what are the nutrients which is present inside the food? Vitamin A, B, C, D, minerals, iodine, phosphorus, carbohydrate, all these things we study. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry, and lady's finger and other things, fish curry, vegetables. All these things we already study. Butter, milk, pickles, achar. Some examples of meals from different regions are selected food items. अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन पे अलग अलग तरह के फूड्स जो है खाए जाते हैं. इन टेबल 2.1 वी कंपेयर, हम टेबल 2.1 पे से कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल पंजाब एंड आंध्र प्रदेश. एंड समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. तो बहुत सारी वेराइटी हमारे खाने में मील्स में नहीं होती है. इफ़ वी हैव ट्रेवलिंग, जब हम यात्रा करते हैं, वी आर ट्रेवलिंग, वी मे ईट वाट एवर अवेलेबल इन ऑन द वे. तो हम जब भी यात्रा करते हैं तो हमें जो भी रास्तों में मिलता है हमसे क्या करते हैं, खाते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स आर ईटन. So in components of food, it is an introductory part. So in next part we discuss the more things. Here we compare. अभी हम compare करेंगे पंजाब और आंध्र प्रदेश में कि यहाँ पे जो दिस रीजन्स में क्या क्या खाए जाते हैं. आइटम्स ऑफ ग्रेन्स, गेन्स यानी कि अनाज. पंजाब में क्या खाया जाता है, मक्के की रोटी. दे आर ईटिंग द मक्के की रोटी. एंड इन आंध्र प्रदेश दे ईट राइस. आंध्र प्रदेश में ये क्या खाते हैं, ये चावल खाते हैं. दे आर ईटिंग द राइस. And in the items of dal or meat, in Punjab they eat the rajma, and in Andhra Pradesh they eat dal. So Punjab they eat rajma and in Andhra Pradesh they eat dal. This is the activity number 1, and we compare the two states for their food or grains. And vegetables में in Punjab they are eating the sarson saag or mustard leaf curry, and in Andhra Pradesh they eat the kundru and broccoli. And in other ingredients they eat curd and ghee. In Punjab they eat curd and ghee, and in Andhra Pradesh they eat butter. Okay. As we move to the our last chapter, जगह अगर हम पिछले लास्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिफरेंट थिंग्स के बारे में स्टडी किया था. इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट. So all these things are tested, okay, in this chapter. तो what you have to do, आपको क्या करना है, you first of all you take your notebook and write down the parts of plant. ठीक है, लास्ट में जैसा हम लोगों ने किया था. इन लास्ट चैप्टर वी आर डूइंग द पार्ट्स ऑफ प्लांट, flower, stem, leaves, root, birds, all these things, and with their examples. In the same thing you have to do in this chapter. You have to make a note about the vitamins,
proteins and their example. For example, soybean is a protein which is comes from the plant, and there are the different types of content. For example, dal, egg, fish, all these things, oil, and all different things we eat. Okay, so examples of fat, examples of protein, examples of minerals, all these things you have to do with your own. आपको खुद से इसके एग्जांपल्स लिखने हैं। विटामिन सी के एग्जांपल्स क्या होंगे, विटामिन ए के क्या होंगे, एंड व्हाट आर द सोर्स ऑफ। ओके, थैंक यू।